Hello everyone, welcome to my YouTube channel Harmonic. Today we will discuss about the frequency distribution in the subject Biostatic and Research Methodology BP801TT. So first frequency distribution. देखिए frequency distribution की ज़रूरत क्यों है? हमारे पास बहुत ही एक बड़ा लार्ज कोई डेटा है अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि दिस इज द डेटा ऑफ मार्क्स दैट इज इन स्टेटिस्टिक ऑफ 250 कैंडिडेट मतलब 250 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स है. सो इफ वी हैव लार्ज डेटा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और इंटरप्रेट कैसे करेंगे. लेट अस कंसीडर द मार्क्स इन स्टेटिस्टिक ऑब्टेन बाय 250 कैंडिडेट. द डेटा दिस डेटा does not furnish any useful information and is rather confusing to mind. देखिए ये डेटा है वो कंफ्यूज करेगा कि भाई इसके ऊपर से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिल सकता है. सो फॉर दैट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. सो फॉर दैट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी व्हाट वी विल डू, सबसे पहले जो भी हमारा डेटा है मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है उसमें मिनिमम मार्क कितने हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो एक टेबल बनाएंगे. तो सबसे पहले टेबल में लेफ्ट कॉलम में सबसे पहले मार्क लिखेंगे. मिनिमम मार्क से स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 15, 17, 18 लाइक दैट. देन वी विल पुट वन बार इफ द अकरेंस ऑफ द 15 वंस. देखिए एक बार 15 मार्क आ रहे हैं कोई स्टूडेंट को तो यहाँ पे वी विल पुट वन बार, अ बार दैट इज कॉल्ड एज अ टेली मार्क. यहाँ पे हम 15 के सामने रखेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स अगर ये रिपीट हो रहा है, रिपीट दूसरी बार आ रहा है, देन वी विल पुट अनदर टेली मार्क्स. नाउ हैविंग अकर्ड 4 टाइम्स. देखिए कोई एक मार्क्स का जो लेवल है वेरिएबल दैट विल अकर फॉर 4 टाइम्स. देन फिफ्थ अकरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस टेली ऑन द फर्स्ट 4 टेलीज. देखिए यहाँ पे 30 पे मैंने ये एग्जाम्पल ये सेट है कि कोई अगर 4 बार अगर अकरेंस हो गया है देन फिफ्थ टाइम अगेंस्ट इट इज रिपीटेटिंग, देन वी विल पुट वन ऑफ द क्रॉस टेली ओवर हियर. यहाँ पे मैंने क्रॉस टेली पुट अप किया है. देन आफ्टरवर्ड्स वी विल कैलकुलेट. देखिए ये एक बार पूरा डेटा है 250 स्टूडेंट का डेटा है. हमने टोटली यहाँ पे एक बार सबके सामने टेली मार्क रख दिया. देन आफ्टरवर्ड्स वी विल कैलकुलेट. देन 15 द अकरेंस ऑफ 15 दैट इज फॉर 2 टाइम्स. लाइकवाइज अकरेंस ऑफ 30 दैट इज फॉर 5 टाइम्स. So like that, whatever the data we have, now we can say the marks that is obtained, that is the variable that is known as a x, and whatever the frequency, that means the number of student that got the particular mark, that will be known as a frequency. And like that, we can write over here the total frequency. This technique facilitates the continuing counting of the tally marks at the end. This is known as a simple frequency distribution. Now the word frequency that is derived from the how frequently a variable occurs. Frequency that means how frequently one variable it occurs in our data. For example, in this case the frequency of 31 that is 10, as there are 10 students who are getting the 31 marks. Now whatever the data we have, this representation it is better than array. Array एक क्या होता है कि यहाँ पे this is one of the arrangement of the quantities or symbol in a row and column. So whatever the data we have obtained, it is better than the array, but again it does not condense the data much and it is quite cumbersome. मतलब थोड़ा बल्कि है, अभी भी डेटा है ये बल्कि है and we cannot go through all the data whatever we have obtained. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, again we will divide the data into a frequency table and we will show over here the class interval. If the identity of the individuals about whom a particular information is taken is not relevant, then the first real step of condensation. देखिए यहाँ पर हमें डेटा कंडेंस करना है, कम करना है. So the first step of the condensation that is to divide the observed range of variable into a suitable number of class interval. That means number of class interval में हमें यहाँ पे जो भी डेटा है उनको डिवाइड करना पड़ेगा and to record the number of observation in each class. देखिए यहाँ पे हमने टेबल में क्या किया है, पहले 15 से 19 मार्क, 20 से 24, 25 से 29 ये मार्क कितने ऑब्टेन हुए हैं वो हमने यहाँ पे उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी जो भी मिल रही है वो हमने नोट डाउन की है. तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी डेटा अभी हमें मिल रहा है वो
पहले जो डेटा मिल रहा था उससे थोड़ा कंडेंसेशन इसका हो गया है। तो यहाँ पे क्लियरली वॉट एवर द फर्स्ट टेबल वी हैव, तो फर्स्ट टेबल जो हमारे पास था ये सबसे पहला टेबल था, ठीक है। तो यहाँ ये डेटा के ऊपर से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नाउ ऑन द थर्ड टेबल ये डेटा के ऊपर से हमें समझ में आ रहा है कि भाई 250 स्टूडेंट है, उसमें से 9 स्टूडेंट ऐसे है, 9 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गेटिंग द मार्क्स इन बिटवीन 15 to 19, लाइक दैट one student is there who is getting the marks in between 65 to 69. Now such a table showing the distribution of the frequency in the different classes is called a frequency table, and the manner in which the class frequencies are distributed over the class interval. देखिए यहाँ पे frequency table को distribute करने के लिए हमने class interval का use किया है. Then such a data that is known as a grouped frequency distribution of the variable. मतलब ये जो डेटा है हमारे पास that is known as a grouped frequency distribution of the variable. Now a systemic presentation of the different value taken by the variable together with corresponding frequency is called a frequency distribution, and which is represented or which is presented in a tabular form. Tabular form में हम ये डेटा को present कर रहे हैं, and that is known as a frequency table. Now if class interval are not given, देखिए आगे का जो डेटा था उसमें class interval थी, लेकिन if we have a data which does not show any class interval, then it is called as discrete frequency distribution. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, नंबर ऑफ पैकिंग हैज बीन रिटन ओवर हियर, मतलब नंबर 1 आइटम है उसका 18 पैकिंग है, नंबर 2 है उसका 15 पैकिंग है, लेकिन द क्लास इंटरवल हैज नॉट बीन गिवन, सो सच अ डेटा दैट इज नोन एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. If the class interval are given, then frequency distribution is called as a continuous frequency distribution. देखिए यहाँ पे हमने जो भी नंबर ऑफ आइटम है 0 to 20, so in between 0 to 20 there is 18 packing, in between 20 to 40 there is a 15 packing, so like that the data is continuously and the interval, class interval has been given, so such a data that is known as a continuous frequency distribution. Then further the class interval that is also divided into 2 categories. First one that is the exclusive, and second one it is a inclusive. So first we will see exclusive class limit. The class interval that does not include upper class limit is called an exclusive class interval. देखिए यहाँ पे 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60 ये हमको एक डेटा दिया गया है यहाँ पे. So now in this table the class 0 to 20 does not include the value of 20. यहाँ पे 20 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. जब हम नंबर ऑफ अकरेंस या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 20 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. सो सच अ डेटा दैट इज नोन एज अ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. एंड नेक्स्ट वन दैट इज द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. द क्लास इंटरवल दैट इंक्लूड बोथ द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द क्लास 1 to 20 it includes all the values from 1 to 20, so both are inclusive, मतलब 1 नंबर अगर हमें फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है that also it will be included over here, and 20 that will also be included over here. So this is known as an inclusive class interval. So over here in this video we discuss about the telemark, variable x, how to find it out on the basis of variable, how to find frequency, then the grouped frequency distribution, frequency table, continuous frequency distribution, then class interval. In class interval again it can be divided in an exclusive class interval and inclusive class interval. So this is about the frequency distribution. Thank you for watching this video.